Hello everyone, now we will write a code to determine if a given number is even or odd. So now we will ask our user to enter a number and L to execute the later part of code from the next line. Now we will declare a variable num. Now we'll store the value of the number provided to us by the user in the variable that is num. अब हम मॉड्यूल ऑपरेटर का यूज़ करेंगे डिटरमाइन करने के लिए कि गिवन नंबर इवन है या ऑड है. फॉर एग्जांपल अगर गिवन नंबर 3 है, सो 3 मॉड्यूलो 2 इसका वैल्यू होगा 1. मॉड्यूल ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, सो देयरफॉर द रिमाइंडर इज़ 1, देयरफॉर इट इज़ एन ऑड नंबर. अगर नंबर होता 8, सो 8 मॉड्यूलो 2 विच इज़ इक्वल टू 0, देयरफॉर इट इज़ एन इवन नंबर. सो इफ़ num modulo 2 equal to 0, we will print the given number, the number that was provided to us is even. Now else operation, else it will be an odd number. Is odd. Now let's run this code. So for example, the number that we gave them is 38. The given number is even. Thank you.